Hello students, today we discuss about the structure of RNA. In previous video I talk on the structure of DNA. So these DNA and RNA both are the types of the nucleic acid. So today we discuss about the structure of RNA. Most of time it is asked for long question. If asking about its type, then it is asked for short note. So these RNA are mostly present in the nucleus and cytoplasm. तो न्यूक्लियस में के भी अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं और साइटोप्लाज्म में भी आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. एंड बट द स्ट्रक्चर इज वेरी शॉर्ट एंड इट इज सिंगल स्टैंडर्ड. एकदम छोटे रहते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड रहते हैं. डीएनए मॉलिक्यूल कैसे डबल स्टैंडर्ड रहते थे. सो द सिंगल स्टैंड इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट मॉलिक्यूल्स ऑफ पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट लिंक्ड टुगेदर. तो जो सिंगल स्टैंड कैसे बनता है, इसमें फॉस्फेट पेंटोस शुगर है. दिस पेंटोस शुगर आर joined with the phosphate molecules, and at one side there is the nitrogen bases. So the nitrogen bases in RNA are of two types. One is the purine and pyrimidine. In purine, the adenine and guanine are bases, and in pyrimidine, cytosine and uracils are bases. So one sugar molecule and one phosphate molecule, one nitrogen bases together forms the nucleotide. तो न्यूक्लियोटाइड कैसे आरएनए में तैयार होता है. सेंटर में आपको पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल दिखता होगा जो कि पेंटागोनल शेप्ड है. उसके एक साइड में नाइट्रोजन बेसिस ऐड होते हैं और दूसरा जो दो पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल्स जॉइन होते हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल से. सो इससे जो न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है आरएनए मॉलिक्यूल्स का. दिस आरएनए इज ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस. आरएनए के फिर दो टाइप्स बनते हैं उसके फंक्शन के हिसाब से. फर्स्ट इज द जेनेटिक आरएनए और सेकंड टाइप इज द नॉन जेनेटिक आरएनए. इन जेनेटिक आरएनए क्या होता है कि जो इट रिप्लिकेट्स एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल वायरल आरएनए इन प्लांट्स एंड एनिमल वायरसेस. तो जेनेटिक आरएनए में क्या होता है, वो पहले रिप्लिकेट्स होता है और जो भी इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का काम करता है. और सेकंड टाइप है नॉन जेनेटिक आरएनए. So these non-genetic RNA are not replicated, but it performs the cellular functions like protein synthesis. तो जो नॉन जेनेटिक आरएनए वो रिप्लिकेट्स नहीं होते हैं और वो जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है उसमें वो हेल्प्स करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, these non-genetic RNA are differentiated in three different types. First one is the mRNA, that is messenger RNA. Then second is the rRNA, that is ribosomal RNA. And third one is the tRNA, that is the transfer RNA. So all these types of RNA are synthesized by DNA in the nucleus. तो जो भी तीनों आरएनए हैं, आरएनए प्रोड्यूस कैसे होते हैं फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल्स. डीएनए मॉलिक्यूल्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उससे ये आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं. दैट इज एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए. तो हम इसके टाइप्स वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट वन इज द एमआरएनए. सो दिस एमआरएनए इट इज़ लीनियर hairy long RNA present in the nucleus and cytoplasm. So this mRNA, it is linear, hairy and long structure. This synthesizes in the nucleus by DNA and processes it catalyzed by the RNA polymerase second. तो जो मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस कौन करता है, तो
न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है बाय द डीएनए। जो डीएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उससे मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होते हैं, और जो एमआरएनए वो क्या करते हैं, और जो प्रोडक्शन का काम है दैट विल बी कैटालाइज, दिस प्रोसेस इज कैटालाइज्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। जो डीएनए से एमआरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होने की जो भी प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में होती है, और उसमें जो एंजाइम हेल्प करता है, कौन सा एंजाइम, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम वहाँ पे हेल्प करता है। सो एट द 5 प्राइम एंड इज द लीडर सीक्वेंस। Following this amino acid coding sequence at the 3 prime end there is the trailer sequence। तो जो लेफ्ट हैंड में 5 प्राइम एंड है वहाँ पे लीडर सीक्वेंस अटैच रहता है, तो जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पे ट्रेलर सीक्वेंस अटैच रहता है। In this process the capping enzyme acts as a guanine nucleotide to the 5 prime end, and the cap is essential for the ribosomes to bind the 5 prime end of the RNA. At the 3 prime end, a sequence of about 50 to 250 adenine nucleotides is added. It is called a poly A tails। तो जो आपको फिगर में स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा, स्ट्रक्चर एमआरएनए का कैसे लीनियर हेरी स्ट्रक्चर है। जो तो एमआरएनए प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो प्रोड्यूस्ड बाय इन द nucleus by the DNA molecule, and this process is catalyzed by the enzyme RNA polymerase second। So in this mRNA 5 prime end there is the leader sequence are added, and at the 3 prime end there is the trailer sequence are added। So at the 5 prime end there is the guanine nucleotide sequence is added, and at the 3 prime end there is the 5 prime end there is the at the 3 prime end there is the adenine nucleotide sequence are added, and they form a poly A tails। वहाँ पे adenine sequence about 50 to 250 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पे ऐड होते जाते हैं, और वहाँ पे एक पॉली टेल लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म होता है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स का। और जो कैप है मिथिलेटेड कैप, सो दिस मिथिलेटेड कैप इज इम्पॉर्टेंट इन अटैचिंग or to binding the ribosomes to the 5 prime end of the mRNA। तो जो मिथिलेटेड कैप है वहाँ पे ग्वानिन सीक्वेंस वहाँ पे मोस्टली ऐड रहते हैं, तो दिस कैप विल बी हेल्पफुल टू द mRNA to bind the ribosomes। वहाँ पे राइबोसोम्स ऑर्गेनेल्स अटैच हो जाती है, और जो मिडल पार्ट है at the initial side after methylated cap there is the initiation codons are present, and at the tail side there is the termination codon is present। So the structure is like the non-coding region, coding region, and again the non-coding region। So this is about the structure and functions। The is as a name, that is the messenger, so it act as a messenger and it synthesize in the nucleus on one of the strands of DNA by the process of transcription। so इसका मेन काम तो क्या है, मैसेंजर का जो मैसेंजर्स पास करने का काम ही करता है, और this also synthesizes in the nucleus जो
डीएनए स्ट्रैंड से ये आरएनए मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। So this is all about the types of mRNA. Then second type is the ribosomal RNA. So these ribosomal RNA that are present in the ribosomes, and it is very longest RNA comprising 80% of the total RNA. तो जो ribosomal RNA रहते हैं वो सबसे ज़्यादा 80% रहते हैं। In the cells, it is synthesized in the nucleus by DNA, and the process is catalyzed by RNA polymerase II, that is same as like messenger RNA. Then its final organization takes place in the cytoplasm. The ribosomes is a nucleoprotein material made up of one or more rRNA molecules and ribosomal proteins. So जो rRNA मोस्टली राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है और उसमें अबाउट 80% ऑफ टोटल आरएनए राइबोसोमल आरएनए हमें दिखाई देते हैं। जो सिंथेसाइज है मतलब rRNA कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होते हैं बाय द डीएनए से प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ पे एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज सेकंड उसे हेल्प करता है डीएनए से आरएनए फॉर्म होने में। तो ये आरएनए फॉर्म होके फिर वो साइटोप्लाज्म में वर्क करते हैं। तो दिस राइबोसोम्स इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन मटेरियल made up of one or more rRNA molecule and ribosomal proteins. तो ribosomes क्या है? That are the nucleoprotein materials and made up by the ribosomes में rRNA molecules and ribosomal proteins होते। वो हमने जो सेल ऑर्गेनेलिज में हमने राइबोसोमल स्ट्रक्चर स्टडी किया है, वहाँ पे मैंने बताया आपको कि यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स कैसे रहता है। 18S राइबोसोम रहता है, प्रोकैरियोटिक में 17S रहता है। तो 18S इज डिफरेंशिएटेड इनटू 16S एंड 14S। 60S इज द लार्जर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट इज द 14S। फिर उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है कि राइबोसोमल प्रोटीन्स कितने रहते हैं और आरएनए कितने रहते हैं। So there is the different composition in the 16S and 14S in there. Similarly, in the prokaryotic ribosome are also there is the smaller and larger unit. 15S is the larger unit and 13S is the smaller unit. In that there is the in 15S there is larger unit. In that 80S rRNA is present, and also there is another part, there is that 17S rRNA plus 34 ribosomal proteins are present. So in the ribosomes there is a different proportions of the rRNA molecule and ribosomal proteins. So each ribosomes, that is monosomes, has two subunits, larger and smaller, and both are associated with each other. प्रोकैरियोटिक्स में 17S पार्टिकल्स रहते, उसमें लार्जर पार्टिकल 15S और स्मॉलर 13S है। इन यूकैरियोटिक में मोनोसोम्स कितना है 18S है, उसमें जो लार्जर सब यूनिट है दैट इज 16S एंड स्मॉलर इज द 14S. इन यूकैरियोटिक्स दिस 16S subunit consists of 5S rRNA, 5.8S rRNA and 49 different in small unit and SRNA.
Similarly, these smaller and larger part of these ribosomes or subunits contains different composition of rRNA and ribosomal proteins. So this is all about the structure of rRNA. Next part is the function. So main role of rRNA in the protein synthesis. So it provided proper binding site for the mRNA on the ribosomes. Then to orient it mRNA and to release the tRNA from the mRNA. तो ये क्या करता है, tRNA को रिलीज़ करता है mRNA से. प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में मोस्टली rRNA का रोल है, और जो न्यूक्लियोटाइड जो mRNA मॉलिक्यूल को प्रॉपर बाइंडिंग साइट ये rRNA प्रोवाइड्स करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ribosomal RNA. And last part is the tRNA. This tRNA, that is the transfer RNA, look the structure in that at the 3' end there is the attached amino acids, and that is the acceptor stem, and at the 5' end there is the guanine base. At the basal part there is the some anticodon or anticodon loop is present. So this tRNA is a single stranded and variably folded on itself. The short arm 5' end in guanine, and on the long arm 3' end is the CCA nucleotide sequence. During protein synthesis, the activated amino acids get attached to this CCA end. The anticodon are situated opposite to the amino acids arm. तो स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा होगा, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है. उसमें एक शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म है. जो 5' एंड है दैट इज़ द शॉर्ट आर्म and that attach the guanine base, and the long arm at the 3' end, and the sequence are the CCA. During the protein synthesis, the activated amino acids that get attached to this 3' end to the CCA sequences. Then at the to this arm, opposite position of this arm, there is the anticodon loop is present. So the function of this tRNA is it carries the amino acids from cytoplasm to the ribosomes during protein synthesis. तो मेन tRNA का रोल क्या है, देयर इज द ट्रांसफ़र क्या करता है, तो अमाइनो एसिड्स ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द ribosomes or and in the process of protein synthesis. So this is all about the structure of the rRNA. So lastly I conclude that in that फर्स्टली हमने आरएनए का स्ट्रक्चर देखा जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है. वेरी शॉर्ट स्ट्रक्चर है एंड सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है. तो आरएनए मॉलिक्यूल्स तैयार कैसे होता है, तो देयर इज द चेन ऑफ पेंटोस शुगर जॉइन विद द फॉस्फेट ग्रुप एंड ऑल्सो द नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस कौन से इसमें, in purine adenine and guanine, and in pyrimidine cytosine and uracil. So according to the functions, RNA molecules are divided into two types. One is the genetic RNA and non-genetic RNA. Genetic RNA, that means it replicates and transfer the information, for example plant and animal viruses. And in non-genetic RNA,
These are not replicated and they perform functions in the protein synthesis. So these are three types: messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer RNA. All these are synthesized in the DNA, synthesized in DNA in the nucleus. So first types हमने देखा mRNA. mRNA linear structure है. At the 5' end there is the methylated cap is present, and at the 3' end poly A tails are present. So at the 5' end there is the guanine sequence are attached, and the poly A tail there is the 50 to 250 adenine sequence are added. The function of this mRNA is the messenger. Then second type is the rRNA, which is present in the ribosome. So this is a largest part comprising 80%. In that, in prokaryotics it is 17S, and in eukaryotic it is 18S. So these ribosomes contains two subunits, that is larger subunit and smaller subunits, and it contains rRNA molecules and ribosomal proteins in different compositions. The functions of rRNA mostly in the protein synthesis, that is provide binding sites to the messenger RNA. Then third type is the tRNA. In that it is also single stranded, but it is folded on itself, so it forms short arm and long arm, and that opposite to the anticodon loops. At the 5' end there is the guanine nucleotide bases are added, and at the 3' end there is the acceptor end. In that ACC amino acids get attached. So always at this 3' end the amino acids are attached. So this tRNA functions as a carries the amino acids from cytoplasm to the ribosome. So in short, this is all about the ribosome. I hope all of you are got about this ribosome structure. So now I stop here.